Deloitte हो गया, KPMG हो गया, even they have got placed in companies who are working as companies who works as election campaign consultancy. तो वहां पे भी ये लोग काम करते हैं. तो वर्क प्रोफाइल बहुत डाइवर्स हो सकता है, एंड विल बी टॉकिंग इन डिटेल कि प्लेसमेंट्स के स्ट्रक्चर और बाकी चीजें क्या हो सकती हैं इन लेटर स्लाइड्स. पहले अभी हम लोग इस पे बात करें. तो क्लास ये है ये कि यू नीड टू अंडरस्टैंड द कोर्स इनसाइट, एंड एक तरह से समझो कि अलाइनमेंट, यू नीड टू अलाइन योरसेल्फ फॉर दिस कोर्स व्हिच इज कॉल्ड रेगुलेटरी पॉलिसी एंड गवर्नेंस. ठीक है. कुछ की टर्मिनोलॉजीज ऐसे हैं, मतलब आई हैव जस्ट put few terms that so that you can relate कि what a regulatory body can be. So regulatory and statutory will be the part of the syllabus, and I just discussed these two words with you. Citizen charter is something when a government department or a bank uses that in this time, in this amount of time or this stipulated time may some work can be done or should be done. Otherwise, the responsible officer can be penalized or can be asked for clarification. So there is also a word called ombudsman, which is like Lokpal of bank. And you all know the Lokpal bill, the demand of Lokpal bill, which was like regulation for the entire government processes, either it be it legislative or even judiciary also. So we'll not be talking about these, but these are the terms through which you can make your mind that what could be this subject and the syllabus. So how regulation is being defined? I have just taken the definition from Planning Commission, and in fact, this particular definition and some other things that I have taken in these slides has been directly copied from the test website, the course description. So the regulation is broadly understood as an effort by the state. State here, state is what? A state is the your government. State to address social or environmental risk, market failures, or equity concerns through rule-based directions of social and individual actions. It's not just this, even it also addresses the administrative corruptions, and it's tried to maintain natural market dynamics so that with external resources, no company can disrupt the market in a big way so that other companies may go in loss or may go obsolete. And also for a company, all the stakeholders, or even for a product, all the stakeholders should be their rights should be preserved. So the goal of regulatory bodies also is to safeguard all the stakeholders, as in like in the for the product side, you can say the consumers also, and the governors, like the equity holders also. And there is one big uh, objective of regulatory bodies is to environmental and ecological safety through the companies or industries operations. So here are few regulatory bodies which we have crafted, and I'll put something here. I was reading a economist essay that even in Malaysia there are 82 full-fledged regulatory bodies, and our country doesn't have that much of regulatory bodies. So we have regulations for almost everything, but not concrete regulatory bodies and regulation system which is responsible for regulation in an not constitutional basis, but in a legal or structural framework में ऐसा काम नहीं करते हैं इंडिया में. ठीक है. But you must know that TRAI or SEBI, these IRDI, these IRDA, these regulatory bodies has actually done a very good job in administrating those sectors for which they are working. Yeah. Competition Commission of India is still a weak organization. और भी कई सारे organizations हैं जो which is there, but they are toothless. एक तरह से आप ऐसा कह सकते हो कि they are toothless in terms of executing the regulations. So there are some other bodies which are not
just regulatory bodies. They are also the planning, and they come up with the different other process support to the organizations like UGC, AICTE, NABH, and other organizations are also there. Which one of the part, one of the functions that they carry is also of regulations. So the program objective, what is the program objective? The program seeks to provide a comprehensive understanding of contemporary regulation theory and emerging regulatory practice models, both at national and international levels, taking on board of neglected critical dimensions such as equity, environment, democratic participation, and sustainability concerns. कुछ कुछ एग्जांपल्स लेके आपको समझना पड़ेगा कि हाउ इक्विटी इज ऑन स्टेक, हाउ इट कैन बी अंडर थ्रेट, हाउ एनवायरनमेंट इज अंडर स्टेक. हालांकि आप लोगों को पता होगा कि जैसे हम कोई भी इंडस्ट्री को रन करते हैं तो वी यूज एनर्जी, वी कंज्यूम एनर्जी एंड ओमिट पॉल्यूटेंट्स. तो वो कैसे आप उसको कंट्रोल कर सकते हो विदाउट डिसरप्टिंग द मार्केट डायनामिक्स. ठीक है. डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, अब ये सुनने में अच्छा लगता है, बट यू नीड टू फाइंड दैट हाउ रेगुलेटरी बॉडीज एक्चुअली हेल्प्स इन दिस. ठीक है. एंड सस्टेनेबिलिटी कंसर्न्स. And the program objective is also to equip students with a strong conceptual and theoretical understanding as well as practical skills to analyze and design regulatory solutions for a given problems. अभी मैंने आपको बताया ही कि इंडिया एज एन कंट्री इज वेरी वीक इन रेगुलेशन सिस्टम. हमारी रेगुलेटरी बॉडीज या तो सही से काम नहीं करती, या फिर वो वेल मेड नहीं है, वेल स्ट्रक्चर्ड नहीं है, और इधर दे डोंट हैव rights to regulate. They have just made on paper. They have been just made on paper. तो ऐसे cases में you know what are the scopes for a person who is good at it, or who actually understand and design and come up with the solution, regulatory solutions for any particular department or problems. तो आप लोग के लिए हमेशा एक employment opportunity रहेगी. और ये program, and since this is the only program in India which actually trains you for regulations and regulatory policies. So कुछ कुछ टूल्स, जैसे रेगुलेशंस के टूल्स ऐसे होते हैं कि कुछ इकोनॉमिक तरीके होते हैं, जैसे इकोनॉमिक वे टू रेगुलेट, एंड देयर इज कॉस्ट इन्वॉल्व्स इन रेगुलेशन आल्सो. तो जैसे टैरिफ सेटिंग करना या डिटरमाइनिंग कोटा एंड इंटर, जैसे तुमने 2G और 5G का जो वो देखते होंगे ना ऑक्शंस, कि कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, सेटिंग सर्विसेज एंड अदर स्टैंडर्ड्स, एडजस्टेशन, परमिट्स एंड कंसेशन कॉन्ट्रैक्ट्स. ये सब देख लेना तुम लोग कि कहाँ पे क्या जरूरत पड़ती है. इसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि जो रेगुलेटरी बॉडीज पनिशमेंट के तौर पे जो एक्ट बनाती है कि इफ विल नॉट रूल ऑफ द बॉडी, सो व्हाट विल बी द पनिशमेंट. वहां पे एक लीगल वेरिफिकेशन या लीगल एडाप्टेशन की जरूरत होती है, because any punishment that you are creating should not go beyond the Indian penal code or Indian constitutional rights. उसके बाहर नहीं जाना चाहिए. इस पूरे सब्जेक्ट, मतलब जैसे अगर आप ये कोर्स को पढ़ने जाओगे तो बहुत सारे तरह की वैरायटी ऑफ पेपर्स विल बी रीडिंग, इकोनॉमिक्स या सोशल impact of organization or governance system, or even government bodies, working of government bodies. तो फाउंडेशन पेपर्स हैं. उसके बाद आप रेगुलेशन और रेगुलेशंस रिलेटेड जितने भी मैकेनिज्म है या फिर सेक्टर बेस्ड रेगुलेशंस हैं, उसको उस पे भी पेपर्स होंगे. और आपको इलेक्टिव्स, मतलब इलेक्टिव्स कहने मतलब ये होता है कि फिर यू कैन चूज योर फील्ड, कि आप फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेशंस में जाना चाहते हो, या फिर रियल एस्टेट, या हेल्थ, या फिर एनी अदर एरिया वेयर यू वांट टू वर्क. ठीक है. एंड लास्टली व्हेन मतलब सारे कोर्सेज को लेकर ये लास्ट में यही सवाल होता है बच्चों का कि भाई नौकरी क्या मिलेगा. तो कई सारी कंपनीज हैं जो ई गवर्नेंस या गवर्नमेंट कंसल्टिंग के लिए काम करती है. दे विल हायर यू because as in regulatory body, as an RPG students, you'll be very well aware of
not only how to bring a regulation system, but also the existing regulation system also. In that case, uh, for a company who works under these regulatory systems, उनके लिए भी एक resource की जरूरत पड़ती है कि somebody who knows the entire framework of regulation. क्योंकि जनरली तुम अगर कभी किसी भी डिपार्टमेंट की रेगुलेटरी बॉडीज का एक फाइल पढ़ोगे ना, इट विल बी लाइक 200 पेजेस, 300 पेजेस. तो वहां पे भी एक्सपर्ट की जरूरत थी. इट्स नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड्स ओनली, इवन द कॉर्पोरेट साइड्स यू विल बी रिक्वायर्ड टू कॉम्प्रिहेंड द रेगुलेशन ऑफ द स्टेट एंड वर्क अकॉर्डिंगली. और केवल वो इंडिया की बात नहीं होगी, वो पूरे जैसे अगर कोई कंट्री इंडिया से मैक्सिको जाना जाना चाह रही है, तो फिर वहां के रेगुलेटरी बॉडीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी फॉलो करना पड़ेगा. तो आप अपने यहाँ के करंट प्रैक्टिस विच इज इन इंडिया में कितना चेंज करना चाहोगे, कितना कराना चाहोगे. तो ऐसे जब जगहों पे भी आपका रोल होगा. एंड यू कैन फाइंड एम्प्लॉयमेंट इन ऑल काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस लाइक नॉन गवर्नमेंट लॉ फर्म्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, एंड यू कैन ऑल्सो गो इनटू रिसर्च. तो इस कोर्स को पढ़ने के बाद अनएम्प्लॉयमेंट वाली कोई बात नहीं होगी. कैपेबिलिटी भी आपकी बहुत, मतलब लाइक वेरी डिफरेंट सेक्टोरल एरिया में आपको आपका कैपेबिलिटी डेवलपमेंट होगा. एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कोर्स. तो अगर आपको एक एक आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो इकोनॉमिक्स भी समझते हो, एंड यू ऑल्सो ट्राई टू रिलेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज के मार्केट पे और कस्टमर पे और इन्वायरमेंट पे और इकोलॉजी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो उस केस में आपके लिए बहुत अच्छा कोर्स हो सकता है. अब रही बात कि आपको ये अप्लाई करना है कि नहीं, ये आप अभी नहीं डिसाइड करोगे. अभी आप सारे कोर्सेज के बारे में पढ़ो. व्हेनेवर आई विल बी रीडिंग एनी कोर्स, तो आपको वो अच्छा ही लगेगा. क्योंकि मुझे पर्सनली सारे कोर्स अच्छे लगते हैं, बिकॉज एवरी कोर्स